So hey, what's up? हे हिम्मत, हे हिम्मत, तू लगा बैठ, बोल, आएगा, आएगा। Yeah guys, I know it's no longer 2024, it's now new year 2025 and 1 month of this year is now almost finished, and now I'm finally back again after 1 month with another video. But please don't ask me the reason why I delayed so much, because if I try to explain the reason, this video will get too much long, especially the intro will get too much long. So please, I don't want to waste your time, just to explain the reason. So alright, as you've seen in the thumbnail, today we're going to craft Samurai Saber, and I know this Beyblade was released long ago and now I'm making the Bey, but anyway, today we're going to craft this Beyblade with gimmicks. So let's get started. तो ओके, समुराई सेबर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समुराई सेबर का कुछ प्रिंटेड टेम्पलेट चाहिए, लाइक यू कैन सी इन द वीडियो. एंड मेनी ऑफ यू आस्क मी सो मच इन द कमेंट्स दैट फ्रॉम वेयर डू आई गेट द टेम्पलेट ऑफ द Beyblade. Well, it's actually pretty easy. If you want to make a Beyblade like I'm making in the video, just simply search the name of the Beyblade. Like for example, if you want to make Samurai Saber, you just have to search the name of the Beyblade on Google Chrome. Like for example, you can search Beyblade X Samurai Saber. अगर गाइस तुम सबको मेरी तरह कोई कार्डबोर्ड Beyblade बनाना है और उसका टेम्पलेट तुम सबको नहीं मिल रहा है, तो भाई गूगल क्रोम में जाके बस उस Beyblade का भाई नाम सर्च कर दो जिसको भाई तुम बनाना चाहते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम समुराई सेबर बनाना चाहते हो, गूगल क्रोम में जाके भाई सर्च करो समुराई सेबर बेब्लेड एक्स. तुमको भाई बहुत सारे फॉन्ट टेम्पलेट्स मिल जाएगा, उनमें से एक भाई तुम डाउनलोड कर लो, उसके बाद भाई साइज एक्यूरेट करके एकदम से प्रिंट कर लो, बस हो गया. एंड फॉर एक्यूरेट साइज एडजस्टमेंट यू कैन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. इन दिस प्लेलिस्ट यू विल गेट मेनी ट्यूटोरियल्स अबाउट हाउ आई एडजस्ट द साइज ऑफ एवरी Beyblade दैट आई वांट टू मेक विथ कार्डबोर्ड. सो या, मेक श्योर टू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. And yeah, you don't have to get confused seeing this, because I casually do this all the time when I prepare a template. Just drawing up the template, that's all I'm doing right now. अगर तुम्हारे पास भाई घर में जो कपड़े भाई इस्त्री करने के लिए जो आयरन होता है, अगर वो तुम्हारे पास है तो ये कर लेना भाई, टेम्पलेट को भी थोड़ा सा आयरन कर लेना तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, कर लेना भाई. ठीक है. Yep, it's been 1 month and you can clearly see the condition of my cutter. After 1 month I'm using my cutter and it's now fully rusty, no longer usable, so we have to replace the cutter with a new blade. Let's go. Okay, so I'm finally done cutting the template of Samurai Sabers. Yeah, I know you are a little bit confused that why I'm holding 2 Samurai Sabers here instead of 1. So as I've mentioned before, I'm gonna make this Beyblade with gimmick. And you can already see that one of the Samurai Saber template has 2 holes. So just keep watching the video. सब कुछ भाई तुम सबको समझ में आ जाएगा. बस वीडियो को भाई अच्छी तरह से देखते रहो, कहीं पर भी स्किप मत करो, नहीं तो भाई तुम सबको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया. ठीक है, तो देखते रहो भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, समझ गया. Okay, now let's just quickly make some cardboard copies of Samurai Saber using my pen. Well, normally to make a Beyblade Beyblade with cardboard, I mostly prepare or draw total 5 cardboard template copies for the layer plate. But this time, as you know, I'm going to make this Beyblade with gimmick. So that is why I'm going to prepare total 6 cardboard template copies. And with the layer plate template of Samurai Saber, total 7 cardboard templates. Hope you understand. समझ गया. Alright, now I'm going to do something very important which I don't know how to explain, but I'm just trying to understand how much gap I have to make on the layer plate just to place the gimmick properly and to see the gimmick will work properly or not. तो अगर आसान भाषा में बताऊं तो मैं बस इस पेंसिल से ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को एक्चुअली इस गिमिक को अच्छी तरह से काम करने के लिए कितना गैप रखना पड़ेगा ताकि ये गिमिक अच्छी तरह से काम कर पाए. क्योंकि भाई देखो, गिमिक बनाने के बाद अगर गिमिक काम ही नहीं किया तो इस गिमिक बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा. तो आई होप तुम सबको समझ में आ गया. समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल बात करो. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो को अच्छी तरह से देख, सब कुछ तेरे को समझ में आ जाएगा भाई. जस्ट वीडियो को गाइस देखते रहो, ठीक है? ठीक है.
Alright, you can already see that how the gimmick is going to work, and I'm very excited to see the gimmick work in real life like the original one. So let's just quickly continue the work. And here's the two blades that works like gimmick and pops out from the Beyblade when the Beyblade is launched, like a turbo Beyblade. Turbo blades awaken something, you know. So this is what I was trying to explain back in the video. So we have to give this much gap for the Beyblade gimmick to work properly. Hope you understand. अब guys, I hope तुम सबको समझ में आ गया भाई मैं एक्चुअली क्या तुम सबको एक्सप्लेन करना चाहता था. हाँ. तो भाइयों सही में बताऊं तो इस छोटा सा टेम्पलेट का कार्डबोर्ड कॉपीज बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा. आई मीन तुम सब देख ही सकते हो भाई मेरा उंगली की जगह मेरे को ट्वीजर्स यूज करना पड़ रहा है टेम्पलेट को पकड़ने के लिए. अबे Alright, now it's time to prepare the ratchet 270, and as you all know that guys, Samurai Saber comes with ratchet 270, and here I have a ratchet 2 template. And if you want to know how to make a ratchet 2 template, make sure to check out the Cobalt Dragon making video. In that video I have showed the tutorial about making this ratchet 2 template. ओ भाई क्या बात है, धुआं ही धुआं निकल गया. सर्दी का मौसम है, धुआं तो निकलेगा ही, और हमारे भी मुंह से धुआं निकलता है रात में बिना बीड़ी फूके. तो चलो भैया अब समुराई सेबर को थोड़ा सा चमकाते हैं अपना फेविकॉल ग्लू से. लेट्स जस्ट क्विकली मेक और समुराई सेबर लिटिल बिट शाइनर यूजिंग और फेविकॉल ग्लू. और भाइयों तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कमेंट करके ये बताया कि भाई मैंने शाइनीनेस डालने के लिए यानी कि बेब्लेड का टैबलेट के ऊपर चमक डालने के लिए मैंने फेविकॉल ग्लू की जगह सुपर ग्लू यूज किया है. अबे तू पागल है क्या भाई? देखो अगर तुमको टैबलेट के ऊपर शाइनीनेस डालना ही है, अगर तुम चमक डालना ही चाहते हो तो भाई फेविकॉल ग्लू यूज करो, कोई सुपर ग्लू यूज मत करना. ठीक है. Alright everyone, after hours of work finally we are done preparing all the cardboard templates of Samurai Saber. Now let's just quickly make this bay. I'm super excited to see the gimmick working like the real one. Let's get started. भाई साहब देख ही सकते हो यार, सोल्डरिंग आयरन से एकदम धुआं निकल रहा है. तो उससे मेरा क्या फायदा? हमको नहीं पता. अबे यार अभी ग्लू स्टिक खत्म होना था. खत्म.
देखो भैया, मैं एक्चुअली भूल ही गया था कि इस गिमिक को बनाने के लिए मेरे को एक स्ट्रॉ या स्टिक टाइप का कोई चीज़ चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो नहीं था, तो इसलिए भाई मेरे को मजबूरी में इस पेन से इस शीश को निकालना पड़ रहा है। वेल, पेन की काली भी लगभग खत्म हो चुका है, तो ये मैं इसको आराम से यूज़ कर पाऊंगा, नो प्रॉब्लम। और तुम सब देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है भाई ये। परफेक्ट। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई सुपर ग्लू गिमिक के अंदर चला गया तो सब कुछ खत्म, टाटा गुड बाय गया, गिमिक काम ही नहीं करेगा। शाबाश बेटा। Alright everyone, after long hours of hard work, finally our new Samurai Saber is ready with gimmick, and here you can see all the parts here looking amazing. I don't know how much accurate like the real one, but I tried my best to make it as much accurate I can, and as you can see the gimmick is working pretty well. और हाँ गाइस, मेरे को पता है कि ये बेट देखने में उतना भी ज़्यादा लेवल बेट की तरह नहीं लग रहा है जो समुराई सेवर के साथ आता है, बट क्या करे भाई, देखो ये कार्डबोर्ड बेलेट है, एक हाथ से बनाया हुआ बेलेट है, इससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। एटलीस्ट भाई अगर परफॉर्मेंस एक्यूरेट होगा तो भाई इनफ है मेरे लिए। अब एक्यूरेसी में थोड़ा सा तो इधर उधर होगा ही, ठीक है। आई नो गाइस, आई नो द बेट इज नॉट लुकिंग एक्यूरेट लाइक द रियल वन, बट हु केयर्स गाइस, इफ द परफॉर्मेंस इज ओके देन एवरीथिंग इज ओके। ऑलराइट माय बॉयज, आवर samurai saber is now fully assembled, and now let's just quickly do a test runs to see if the small blades actually pops out or not, like the turbo blades of turbo Beyblades. Whoa, wow guys, as you can see the both tabs has come out from the blade. So yeah, the gimmick is actually working pretty good. Come on.
Oh, fast finish. Nice. Let's subscribe. Huh? All right.